Hello all, welcome to the course on linear differential equation with constant coefficient. In the last lectures, we have learned and solved the questions purely based on the CF or complementary function. In this video, we are going to find out how to find the PI or particular integral. So the general form of the linear differential equation, recall dny by dxn plus p1 dn minus y by dxn minus 1 plus p2 dn minus 2y by dxn minus 2 up to so on equals to q. So this q is the function of x, right? So here previously we have is q equals to 0, then we have solved the equation purely based on CF. Now it is the time when we will find that if f dy equals to q, then let y equals to u be the particular solution of equation 1, then f d u equals to q. अब जो है इसका इन्वर्स ऑपरेटर एफ डी, जो एफ डी है ना, उसका इन्वर्स ऑपरेटर कैसे एक्सप्रेस होगा 1/fd से. सो देन 1/fd टाइम्स एफ डी यू इज इक्वल्स टू 1/fd टाइम्स q, और u इक्वल्स टू 1/fd टाइम्स q. और पर्टिकुलर इंटीग्रल in short pi equals to 1/fd times q. Now this q could be different functions. We will see one by one and try to understand each and every step sequentially. अब जो q है ना, वो बहुत चीजें हो सकती है. जैसे फंक्शन ऑफ x में वो e raised to x हो सकता है, sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, x हो सकता है. ऐसे ही बहुत सारी चीजें होगी. तो अपन अभी एक करके देखेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट केसेस में pi जो है वो फाइंड किए जा सकते हैं. सो हेडिंग लगाइए जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग pi. अब जब पहला केस कैसे देखेंगे कि q इज एनी कांस्टेंट सपोज, तो उस केस में क्या होगा, सॉरी यहाँ पे q कांस्टेंट नहीं होगा. पहला केस होगा कि 1/d माइनस अल्फा q, जहाँ पे अल्फा इज एनी कांस्टेंट. यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट होगा तो y इक्वल्स टू होगा 1/d माइनस अल्फा q, और d माइनस अल्फा टाइम्स y equals to q. So then dy minus alpha y is q. अब dy अपने को पता है क्या था, dy by dx minus alpha y equals to q. Which is a linear equation in variable y. So this a is a
linear equation in variable y। अब अपन क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन का मेथड अपन ने पिछले वीडियोस में देखा था कैसे सॉल्व करते हैं। सो उसको आई एफ से मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, राइट। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू माइनस अल्फा एक्स होगा। सो आई एफ जो है, क्योंकि पी क्या है माइनस अल्फा, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज माइनस ई रेज टू अल्फा एक्स। और अब इसको सॉल्यूशन कर देंगे, y इंटू ई रेज टू माइनस अल्फा एक्स इज इंटीग्रेशन q इंटू माइनस ई रेज टू अल्फा एक्स dx प्लस का c, और y इक्वल्स टू ई रेज टू अल्फा एक्स माइनस का इधर आया प्लस हो गया, q इंटू ई रेज टू माइनस अल्फा एक्स dx प्लस c ई रेज टू अल्फा एक्स। अब अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए इसका, देयरफॉर अपन c को 0 ले सकते हैं। we want a particular solution of the equation, particular solution of the equation, therefore c can be taken as 0. So then y equals to e raised to alpha x times e raised to minus alpha x times q dx, or 1 upon d minus alpha q is e raised to alpha x times e raised to minus alpha x times q dx. This is the star equation. Now we can find the value of 1 upon alpha d. The main aim, अपना शुरू में aim क्या था, अपने को ये निकालना था 1 upon एफ डी टाइम्स क्यू और द वैल्यू ऑफ पी आई, है ना। तो इसकी वैल्यू अपन अब स्टार इक्वेशन से इजीली फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सो द वैल्यू, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से निकालेंगे। सो आइए देखते हैं। पी आई जो होगा वो होगा 1 अपॉन एफ डी टाइम्स क्यू और 1 अपॉन डी माइनस अल्फा 1 डी माइनस अल्फा 2 डी माइनस अल्फा एन टाइम्स क्यू, और ए 1 अपॉन डी माइनस अल्फा 1 क्यू प्लस ए 2 अपॉन डी माइनस अल्फा 2 क्यू प्लस ए एन अपॉन डी माइनस अल्फा एन टाइम्स क्यू, और a1 e raised to power alpha 1x times integration q raised to power minus alpha 1x times dx as required by equation 9 or equation star plus a2 e raised to power minus alpha 2x times e raised to minus alpha 2x dx plus up to so on a n e raised to power alpha nx times q e raised to power minus alpha n x dx. So see, we have done and find the pi for this case. So this is the longest method. Now if there is suppose there we will learn now some shortcut method for finding pi. So if q equals to e raised to ax, right, similarly to the previous case, then pi would be 1 upon fd times q
So then pi would be 1 upon fd times e raised to ax, then simply replacing a by d, so 1 upon fa into e raised to ax. ये तो हो गया pi, पर if the case fails, if case fails and if denominator is 0, then 1 upon d minus alpha raised to power r e raised to ax is x raised to power r by r factorial e raised to ax. Now we will solve the question and see. Solve d plus 2 d, wait, okay, d plus 2 times d minus 1 cube y equals to e raised to x. Okay, so then replacing d by m, what we got is m plus 2 m minus 1 cube equals to 0, or the roots would be minus 2, 1, 1 and 1. So then CF would be C1 plus C2x plus C3x square e raised to power x plus C4 e raised to power minus 2x, and then Pi would be 1 upon Fd e raised to x e raised to x, then e raised to x 1 upon Fd means d plus 2 or d minus 3, d minus 1 cube, right? Then see d plus 2, so 1 plus 2 3, got replacing d by here 1, so that is e raised to x 1 plus 2 3 d minus 1 का cube, so that is 1 by 3 e raised to x by d minus 1 cube. Now 1 upon 3, अब फॉर्मूला लगाएंगे शॉर्टकट मेथड का, तो x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू ई रेज टू x, so means 3 to the 6, 6 3 the 18, 1 by 18 x cube e raised to x. अब y इक्वल्स टू क्या होता है cf प्लस pi, सो दोनों को जोड़ देंगे c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e raised to x plus c4 e raised to minus 2x plus 1 by 18 x cube e raised to x. So this is the complete solution. एक और क्वेश्चन देखेंगे. d minus 1 square d square plus 1 whole square y equals to e raised to x. Replacing d by m, what we got is m minus 1 square m square plus 1 whole square equals to 0. So then
m would be 1 1 and minus iota plus minus iota. So then c1 plus c2x e raised to x cf would be plus e raised to 0x c3 plus c4x cos x plus c5 plus c6x sin x. So final answer would be c1 plus c2x e raised to x plus c3 4 c4x cos x plus c5 plus c6x sin x. So this would be the CF. Then next we will calculate the PI for the same. PI, it's 1 upon d minus 1 square into d square plus 1 whole square e raised to x. So it is like 1 plus 1 2 square ka 4. So then 1 upon d minus 1 square, this is a 0 term, e raised to 1 e raised to x upon 2 square, which is 4. So 1 by 4 e raised to x upon d minus 1 1 square. So 1 upon 4 d minus 1 square x square by factorial 2 e raised to x 2 4 2s are 8 1 by 8 x square into e raised to x. Then y equals to cf plus pi. So दोनों को जोड़ के लिख देंगे y equals to c1 plus c2x e raised to x plus c3 for c4x cos x plus c5 plus c6x sin x plus x square by 8 e raised to x. Now similarly I will give you one homework question and then we will end the lecture. D square plus 3d plus 2 3d plus 2 times y is e raised to x. Try to do in the homework question. We will discuss it in the next class. Thank you.